All right, so let's start with this. This is May-June 2016, paper 2, variant 2. So let's begin. Acha, so let's just start. Question number 1. Each year, the Reds play the Blues in a baseball match. So these are two teams that are playing, Reds and Blues. They're playing this match. In 2014, there were 40,500 tickets that were sold for the match. Okay, and in 2015, the number of tickets sold was 2.4% more than that in 2014. Calculate the number of tickets sold for the match in 2015. So basically 14 के अंदर 40,500 tickets थे, उनको आपने increase कर देना है by 2.4%, right? So one way to do this would be, you say 40,500 आपके पास initial tickets थी, इसमें आप add कर दें 40,500 का 2.4%, so you can say 2.4 divided by 100, right? So that will give you a result. Or as we used to do before, we know that 100% was the original. 2.4% उसको increase करेंगे, क्या बन जाएगा? It will become 102.4%. तो जो भी आपकी original amount थी, उसका 102.4% calculate कर लें. So you would say 40,500 multiplied by 102.4 divided by 100, and that will give you the same result. So you can choose any one of these methods that you prefer. So what do you get from this? When you do this, you should be getting around 41,472. Okay, so 41,472. This is what we get from this. Okay, हमने उसको बस increase कर दिया 2.4%. अच्छा, then it says in 2015 the cost per ticket for the match was $68.25. Okay, so 2015 में उसने आपको ticket की cost बताई हुई है. Now the cost per ticket for the match increased by 5% from 2014 to 15. Now there's a slight difference as compared to before. उसने पहले आपको 2014 वाली amount बताई थी, यहाँ पे पिछले point के अंदर आपको 2015 वाली calculate करनी थी. Now you're giving the 2015 amount, okay? और उसने बताया कि 14 से 15 पे 2014 से 15 पे जाते हुए there is a 5% increase, right? So 2014 से 15 पे there's a 5% increase in the cost per ticket. ठीक है, अब 2014 वाली amount नहीं पता हमें, उसने आपको बताई है 68.25, that is the amount for 2015. ठीक है, अब इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो ये है कि आप इसका 5% कैलकुलेट करें 68.25 का, उसको उसमें से माइनस कर, उसको 68.25 में से माइनस कर दें, that would be incorrect. You cannot do that. 2015 का 68.25 का 5% नहीं निकालेंगे, जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी 2014 के अंदर, let's call that x, उसका 5% इंक्रीज होगा तो हमें 68.25 मिलेगा, right? So one way to build this equation would be, say x was the original amount x थी, उसमें आप ऐड कर दो क्या 5% of x, that's the same thing as saying 5/100 times x, that should equal 68.25. यहाँ से आप x की वैल्यू फिगर आउट कर लोगे. And again, as we used to do before, आपकी ओरिजिनल अमाउंट अगर 100% थी, उसको आपने इंक्रीज किया 5% से, what does that become? That becomes 105%. That's the same thing as saying आप 105% निकाल लो x का, that should be equal to 68.25, right? So you can do this directly like this. आप पिछले वाले को भी LCM लोगे, आपको वही मिल जाएगा. You'll get this form. You'll find the value of x from here. यहाँ से आपके पास x की value आ जाएगी. Okay. Yes, Minal, this is May-June 2016, paper 2, variant 2. So what do we get here? यहाँ से x की value क्या आती है? 2014 वाली amount. To calculate this, what do we get?
ये क्या होता है? Anyone? Okay, so that's $65 exactly. 65. Yeah, so we get 65 from here. So that's your final result here. So 2014 के अंदर आपकी amount, आपकी जो ticket price थी, that was 65. उसको आपने 5% increase किया, so it became 68.25%. Okay. Then it says calculate the percentage increase from 2014 to 15 in the total money taken for the match. Total money, what does that mean? देखिए, आपके पास एक टिकट प्राइस है, राइट? एक टिकट प्राइस है 2014 के अंदर, और आपके पास नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है, राइट? तो आप टोटल मनी किस तरह निकाल सकते हो? आप 2014 का देखो और 2015 का देखो. What we have is, what the information that we have above is the number of tickets. ठीक है, number of tickets sold 2014 में कितनी थी? They were 40,500. Okay, let's use that number here, 40,500. What about 2015? We calculated them and calculated that in the first part, that was 41,472. So 41,472. अच्छा, एक तो number of tickets आ गई, फिर हमारे पास ticket price क्या थी? Cost per ticket cost, ticket price, that was 65 in 2014, 65 in 2014, and in 15 it was 68.25, 68.25. ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले से. अब उसने क्या कहा? कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल मनी टेकन फॉर द मैच. अब टोटल मनी आपके पास कितनी है दोनों केसेस के अंदर, 2014 और 15 के अंदर? यू जस्ट मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स, राइट? टिकट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टिकट के साथ, बिकॉज़ एक टिकट की यही प्राइस है, उसको नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई करोगे, you get the total money for that particular year. 65 into 40,500, what do we get from that? 65 into 40,500. Let's evaluate that. Can somebody please do these calculations for me a bit quicker? 2626020. Okay. We have 2626020 here. And then we have the second one, 41,472 into 68.25. What about that? That's 2830464. All right. 2830464. ये आपके पास total money आ गई दोनों years के अंदर. Okay. Now all you have to do now is percentage increase find करनी है. So percentage change का formula क्या होता था? Remember, new minus old, right? New minus original divided by the original. Remember, divide आप हमेशा original से करते हो, old वाले से करते हो, into 100%. So what do we get? We get 2830464 minus 2626020 divided by 2626020 multiplied by 100%, and that will give you something. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा. ओके, अलीशा क्या कह रहे हैं? आप मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहे हैं. 2632500. Okay, so the first amount was actually 2632500, and let me correct this. 2632500, 2632500. What do we get from this? Result क्या आता है यहाँ पे? यहाँ से हमारे पास क्या आएगा?
परसेंटेज क्या आती है फाइनल? एनीवन? Okay, so I think what I'm going to do is 7.52. 7.52%. Okay, just give me a minute or two. I think I should quickly get my calculator. I was not able to find it somewhere right now. You guys are making it a bit slow, so I'll just go away for a minute and I'll be back. ठीक है, मैं calculator लेकर आ रहा हूँ जल्दी से. I'll be back in a minute. Okay, guys, so sorry about that. I'm back after being disappointed by Alicia. So let's resume. Okay, so that's question number one. So we have 7.52% here. Any problems with this? Any issues with this? Anyone? You clear है सबको?
All right, let's move on. Let's look at the second one. Acha, so now we've got some vectors here. So we have jk, kl, and lm vectors given. We have to find the vector jm. Okay, so what does that mean? J से start करना है, m पे end करना है. We have three vectors, jk, फिर kl और फिर lm. So we can write it like this: jk. jm is basically going to be jm. j से आप m पे चले जाओ. Sorry, j से आप k पे चले जाओ. Plus kl plus lm, and that will be your vector jm. Right? J से k पे चले गए, k से l पे चले गए, l से m पे चले गए. You reach your final destination. So what is that vector going to be? It's 2, 5 plus 4 minus 2 plus minus 1 and 3, and that will give you the result. So 2 plus 4 minus 1, that is 5, and 5 minus 2 plus 3, that is going to be 6. So that's your vector that you're looking for. Okay, Alicia, it's not a fraction. 5 over 6 नहीं लगता है इसको, right? It's a vector. ये fraction का sign नहीं होता. So it's 5 and 6. Okay. Then it says calculate the magnitude of KL. KL का magnitude चाहिए. Vertical length का मतलब होता है you need the magnitude. Okay. अच्छा. So magnitude का formula क्या होता है? Remember, square root of the x component, x square plus y square. X और y components के square उनको add करना है और उनका square root ले लेना है. So we have 4 square plus minus 2 का square. Take square root, and that's going to be square root of 20. You can write square root of 20. So आप decimals पे लिखना चाहते हो, decimals पे लिख सकते हो, and that's what you get. Okay. अच्छा. So that's your magnitude of the vector KL. आपने सिर्फ formula apply किया, and you get the result. So that's really straightforward. अच्छा. अब उसने क्या किया हुआ है? उसने आपको एक figure दिया. उसके बाद in the diagram OA, the vector OA is equal to A. So that's here. And the vector OB is equal to B, so that is also somewhere here. That's right here. C is the point such that OAC is a straight line. OAC is a straight line, okay, and AC is equal to A. Okay, so this is important information. AC जो है वो 2 times OA है. We have to be, careful about this. We may have to use this. तो अगर आपको पता है कि ये OA है, that is A, तो AC is 2 times that, यानी कि A से C तक कितना होएगा? फिर A से C तक होएगा 2A, right? Because OA जो था, that was A, so 2 times OA, that becomes 2A, so we get 2A here. Okay, इसके बाद वो कहते हैं D is the midpoint of OB. ये जो D है, that is the midpoint of OB. That means if this complete vector is B, तो O से D तक कितना होएगा? O से D तक कितना होएगा? It will be half of that. So O से D अगर हमें vector देखना होता, O से लेकर सिर्फ D तक, that will be half of B. Okay, if you represent this on your graph, it makes your calculations easier after that. उसके बाद एक और चीज आपको बताते हैं, E is a point such that EC vector is equal to the vector OD. Okay, so EC और OD equal है, तो अगर OD half B है, तो EC भी कितना आएगा? That will also be half B, right? So this is all the information that we have. Now let's look at the first part after that. You're asked about the vector AD. A से D पे जाना है. We start at A and end at D. क्या कर सकते हैं? We go from A to O, and then we go from O to D. हम D पे पहुंच जाएंगे. A से start करके D पे पहुंचना है. We can go from A to O, AO, and then we can go from O to D, right? AO क्या है? We know that OA is A. इसका opposite क्या आएगा? It will be minus A. Plus OD, we know that is half B. So that's your result here, minus A plus half B. Okay. Then it says EB vector find करना है. E से start करना है और B पे जाना है. So अच्छा, इस point से start करना है और इस point B पे पहुंचना है. तो आप वो पूरे path को follow कर लो, E से लेकर B तक, right? So EB, इसको पूरा लिखो, it will be EC vector
प्लस CO वेक्टर, C से O पे चले गए, E से C पे गए, C से O पे चले गए, एंड देन यू गो फ्रॉम O to B। ठीक है, इन सारे वेक्टर्स को लिख लें। EC क्या है? EC इज हाफ ऑफ B। CO क्या है? देखें ये A है, ये 2A है, तो OC वेक्टर क्या होएगा पूरा? इट विल बी A प्लस 2A, दैट विल बी 3 टाइम्स A। तो इसका ऑपोजिट दैट इज CO, दैट्स गोइंग टू बी -3A। CO क्या हो जाएगा? -3A, because this is 2A, this is A, total 3A हो गया, लेकिन वो 3A इस डायरेक्शन में है, O से C की डायरेक्शन में। इसका उल्टा करना है तो वो -3A हो जाएगा। What about OB? OB हमें पता है that is just B. We've got B there. We simplify this and we will get 3/2B from there, and then -3A. That is the vector EB. Okay. Yes, Alicia, that's correct. So that's what we get. Acha, then it says find the ratio of these magnitudes, the vector EB ka magnitude, iski ratio with the magnitude of the vector AD. Acha, let's go back in the figure. EB vector, अच्छा EB vector कहाँ पर है? EB vector हमने ये निकाला है, और क्या कह रहा है? AD vector, AD vector is this vector. अच्छा AD vector हमारे पास नहीं है, अच्छा नहीं AD है, sorry, AD is also there. We have both the vectors. हमारे पास AD भी है और हमारे पास EB भी है, दोनों vectors हमारे पास पड़े हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे EB ऊपर लिख लेते हैं, EB ऊपर लिख लेते हैं। We have 3/2B minus 3A. This is the vector EB. We have the other vector, that is the vector AD. जब भी आपसे इस तरह से पूछेगा, वो दोनों वेक्टर्स जनरली पैरेलल हुआ करेंगे। आप यहाँ पे रेशियोस चेक भी कर सकते हो। दूसरा वेक्टर हमारे पास AD है। AD वेक्टर क्या है? दैट इज, उसको भी उस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम हाफ B लिख लेते हैं और बाद में हम A लिख लेते हैं -A। सो वी हैव दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोस फिगर आउट कर लें बस। सो वन वे टू थिंक अबाउट दिस इज यू जस्ट divide this number by this number, or you can divide this number by this number. दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 3/2 over 1/2, that gives you 3. Similarly, आप यहाँ से इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड कर सकते हो, that's -3 over -1, that's also going to be 3. So एक तो ये चीज ये प्रूफ करता है ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, और EB जो है that is 3 times the vector AD. तो इनकी रेशियो पे क्या बन जाएगी? 3:1। EB अगर 3 टाइम, EB अगर 3 है तो AD 1 होना चाहिए। अच्छा, another way to think about this could have been, हम पहले वेक्टर में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 into half B minus A, अब ये अंदर वाला वेक्टर तो एग्जैक्टली वही है AD, so that would have given us 3AD, right? तो इससे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया that the vector EB is equal to 3 times the vector AD, and that's the same thing as saying कि उनकी रेशियो जो है, रेशियो क्या हो जाएगी? EB over AD ratio, that will be 3/1, or that's 3:1. Is that okay? Is this okay to everyone? Okay, that's correct, Alicia. So that is correct. Any issues with this part? Part 2 में कोई issue है यहाँ पे? रेशियो कैसे आई है? Okay, good. अच्छा, part B देखें। Let me just repeat that. EB फाइंड करना था ना part B में आपको, E से B पे जाना है। You have to start at E and then end at B. So we start at this point E and we end at this point B. आपने कोई पाथ ढूंढना है E से B पे जाने के लिए, जहां पे आपको वेक्टर्स पता हो। हमें तो सारे वेक्टर्स पता है, हम E से C पे चले जाते हैं। So that's the path that we follow. We go from E to C. Okay. EC, that's half of B. We know that vector. Half B, हमने वैल्यू लिखा हुआ था वहां पे। Then we have to go from C to O.
राइट, फिर C से O पे चले जाएंगे। अब CO वेक्टर क्या आएगा? We have this 2A and we have this A, लेकिन ये नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर है, हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, so that becomes this 2A plus this A, that's 3A in total, लेकिन उसका negative, we have minus 3A here for CO. Okay, O पे पहुंच गए, अब O से B पे चले जाएंगे, OB vector is known, that is B, so that's just B here. Just add those numbers, add those expressions, and we get this thing here. Is this fine now? Any problems with this? All right, good. Let's move on. Let's look at question number 2 now. Question number 3 now. Okay, so Stephen asked 25 women how many children they have. The results are summarized in the table below. So 25 women in total were asked, right? Now let's look at the table and try to understand the table ka matlab kya hai. Number of children 0, frequency 7. What does that mean? That means 7 women had no children. Unke 0 children the. Okay, 7 of the women had 0 children. So that's what it means. Okay, so 5 women had 1 child, 4 women had 3 children, and so on. So the total आप करोगे इसका, it turns out to be 25. ठीक है, total 25 बनता है, और ये आपको number of children left side पे वो दिया हुआ है. अच्छा, now we have to find the mean children first. Mean find करना है. Okay, let's find the mean. Shahid, we will end at around 4:45 in about 40 minutes. Okay, in about 40 minutes. Alicia, you can stay until midnight. That's fine. But for everybody else, the class will end at 4:45. Okay, let's find the mean. So mean कैसे निकलता है? Mean का formula हमारे पास क्या होता है? We have sigma fx divided by sigma f, right? तो हमारे पास ये x है. This is the variable. We have frequency. Let's call that f. हम पहले क्या करते हैं? यहाँ पे fx calculate करते हैं. Let's multiply these numbers. 0 into 7, that's 0. 1 into 5 is 5. 2 into 6 is 12. 3 into 4 is 12. 4 into 3 is also 12. We add all of them up together. That turns out to be 41. ये हमारा सिग्मा एफ है, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है, right? So we get 41 over 25, and that's going to give us the mean. We can see what that turns out to be. I'm not going to rely on Alicia this time. This is 1.64. 1.64. Okay, very good. So let's find the median after that. अच्छा, median find करना है उसके बाद, ठीक है? अच्छा, 25 लोग हैं total. 25 total है, ठीक है? तो 25 में remember हमने क्या कहा था? median किस तरह calculate करते हैं? It's n plus 1 over 2th value, right? अगर तो odd number है तो डायरेक्टली मिल जाता है, अगर otherwise वो decimals में आता है, फिर आपको उसके ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर की एवरेज लेनी पड़ती है. So we've talked about this in statistics, or we will talk about this perhaps when we cover that topic in detail. So n plus 1 over 2th value, आपके पास n क्या है? 25. 25 plus 1 divided by 2, आपके पास क्या आती है? 13th value. तो डेटा के अंदर जो 13th value होगी वो आपका मीडियन होगा. ओके, 13th value. अब 13th value किधर आएगी? Let's try to think about that. देखें, अब इसको ऑर्डर में लिखें. 0 कितने आ रहे हैं? There are 7 zeros, right? There are 7 zeros. उसके बाद there are 5 ones. टोटल कितने हो गए अभी तक? 7 और 5. टोटल यहाँ तक 12 numbers हो गए. 13th number क्या आएगा फिर? 13th number is going to be 2. Right, so that's our median. Median is going to be equal to 2 there. Now remember, ये group जो table बना होता है आपके पास, इसका मतलब क्या होता है? ये सारे जो numbers लिखे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, it means 0 is being repeated 7 times. उसकी frequency 7 है. जिस तरह 3 is being repeated 4 times. अगर हम इसको ungrouped form में लिखते हैं, अगर numbers सारे अलग-अलग लिखे होते हैं, इसका मतलब ये होता
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 7 times. You have 1, 1, 1, 1, and then 1 5 times. Then you have 6 twos, 2, 3, 4, 5, 6, 6 twos, and then you have threes, 4 threes, and you have 3 fours. ये आपका असल में डेटा है. This is what the data would look like. Now of course यहाँ पे तो सिर्फ 25 थे, हमने देख लिया कि अच्छा ये क्या आ रहा है, इस तरह होता. अक्सर आपके पास इतना बड़ा नंबर होता है, you're not going to write it like this, you're not going to be able to write like this, थोड़ा टाइम लग जाएगा. This is essentially what is happening. अच्छा हमने 13th वैल्यू देखनी है. आप क्या करोगे? आप देखो 7 zeros हैं, आप यहाँ से नजर आ रहा है 7 zeros थे, उसके बाद 5 ones हैं, उसके बाद ये उनका टोटल क्या बन गया? 12. 13th number ये वाला is basically 2. आप देखें 12 के बाद 13th number वो आपके यहाँ पे 2 आना चाहिए. That's why that is the median. Okay. अच्छा, then it says find the mod. Mod क्या आएगा? जिसकी भी highest frequency, जो सबसे ज़्यादा दफा repeat हो रहा है. So whatever has the highest frequency, 7 has the highest frequency. That's our mod. That is going to be 0. Okay. All right. Very good. Achha, Stephen says that the mode is the average that best represents the data. Explain why Stephen is wrong. Okay. What do we think about this? Stephen says that the mod is the average that best represents the data. इस data के अंदर कह रहा है कि mod सबसे बेहतर represent कर रहा है data को. Why is Stephen wrong? You can say 0 तो बिल्कुल सबसे lowest value है. 0 is, you can say 0 is just the minimum value. So that's why he is wrong कि वो तो आपको least value बता रहा है. Average जो है, average आपको बताती है कोई central number, right? कोई central number जिससे आप median आपको कोई center में कोई number तकरीबन बताता है. Mean भी आप calculate करते हो. That's, you know, it's some number, you know, somewhere in the middle. Not exactly in the middle, but somewhere in the middle. Highest या lowest value generally हमारी mean, median, mod नहीं आनी चाहिए. So mod is not really representing your data. It's not really representing the average. Why? Why not? Because you say 0 is the minimum value, right? You can say it's not a central value, right? Which is not a central value in the data. Remember in measures को हम क्या कहते हैं? In measures को हम कहते हैं central tendency measures, mean, median and mod. या आपको कोई overall जो है data के अंदर से एक typical value बताती है कि मतलब तकरीबन जो है सारी values इसके आसपास हैं तकरीबन, right? कोई average value आपको दरमियान में बताती है. Mod is the minimum value here, so that's why it's not representing the data. Mean और median यहाँ पे are both representing the data somewhat. लेकिन mod नहीं कर रहा. For this reason आप यहाँ पे ये लिख दोगे, that will be enough. 0 is the minimum value. That's why it's not given the average. Stephen chooses 2 women at random from the group. अच्छा, अब ये 25 women in total, उनमें से 2 select की हैं at random. Calculate the probability that both of them have just one child. Give your answer as a fraction in the simplest form. Both of them have just one child. How do we calculate this? Let's go and look at the data. कितनी women के सिर्फ एक children है? 5 women have just one child. अच्छा, अब आप क्या करोगे? आपके पास total 25 लोग हैं. उनमें से 5 have one child. Okay. Now you're selecting 2 women. Achha. When you select the first woman, what is the probability that that woman would have one child? 5 out of 25. आपने randomly किसी को select किया है. What is the probability that the woman would have just one child? That's going to be 5 over 25. Okay. अब आपने एक तो select कर ली. What about the probability of the second woman?
अब जब सेकंड टाइम आप सेलेक्ट करोगे, इन 5 में से देयर आर ओनली 4 लेफ्ट, तो न्यूमरेटर आपका 4 हो गया और टोटल में से भी एक कम हो गया बिकॉज़ एक तो आपने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर लिया है. You have 4/24 here, and that's going to give you some result. इसको आप simplify कर लोगे and you get something from here. You get 1/5 into 1/6. That's going to be 1/30. So yes, Alish, that's correct. That's 1/30. That is our result. Okay. All right. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं draw a bar chart to represent this data. Remember bar chart और histogram में क्या फर्क होता है? bar chart में frequency होती है यहाँ पे, histogram के अंदर frequency density होती है. और दूसरा फर्क क्या होता है bar chart और histogram में? bar chart में आपके पास gaps होते हैं bars के दरमियान. histogram में gaps नहीं हो सकते, right? histogram साथ साथ इस तरह होता है, right? bar chart में gaps आ सकते हैं थोड़े से इस तरह से. अच्छा, हमने बार चार्ट ड्रॉ करना है यहाँ पे. लेट्स डू दैट नाउ. अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है. उसने कोई स्केल नहीं बताया हमें, सो वी हैव टू चूज आवर स्केल ऑन द वाई एक्सिस आवरसेल्फ. अच्छा, एक्स एक्सिस पर तो 0 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स आने हैं, 5 नंबर्स, तो वी कैन हैव दोस नंबर्स हियर. सो लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 4, yeah, that's fine. 0 1 2 3 4. अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ना आपके पास अलग अलग नंबर इस तरह से लिखे होते हैं, उसमें कोई स्केल नहीं होता है सच, तो आपने इक्वल डिस्टेंस रख लेना. वाई एक्सिस के ऊपर यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही है? 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से दिस इज 0 हियर, देन 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, अब क्या करेंगे? 0 के ऊपर आपकी क्या वैल्यू है? 0 के ऊपर 7 है, so let's just put some dots there at first. 0 के ऊपर 7 आती है. अच्छा, 1 के ऊपर 1 चिल्ड्रन कितने, 1 चाइल्ड कितने लोगों के? 5. 2 पे 6. अच्छा, 1 पे 5 होना चाहिए, 2 पे 6. okay, then 3 पे 4 and then 4 पे 3. 3 पे we've got 4 and then 4 पे we've got 3. अच्छा, ये हमारी बार्स की हाइट होनी चाहिए. और हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने बार्स बना देने हैं. so we have this horizontal line. अब आपने कोशिश करनी है कि जो बार्स की विड्थ्स हो ना वो सबकी सेम हो, विड्थ्स डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सबकी बार्स बना देते हैं यहाँ पे. I'll be using the line tool for the vertical lines. ये हमने बार्स बना दी. ठीक है, ये आपने स्केल से करेंगे, हाथ से नहीं बनाने, अदरवाइज आपको वो सही नहीं बनेगा. अब हम सिंपली क्या करेंगे, तो इस तरह से बार्स बना दें. ठीक है, अच्छा, so it's going to be a rather slow process for me here. हर दफा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, but you get the idea. It's going to look something like this. ठीक है, ये आप इस तरह से बार्स बना देंगे. And that's your bar chart. You see what's important here? There are gaps between the bars. और bars की width जो है वो सबकी same होनी चाहिए. It should not be different. Histogram में different होती है, bar different हो सकती है, bar chart में different नहीं हो सकती. सबकी width same होगी. ठीक है? So this is what your bar chart is going to look like. All right, ये आपका बार चार्ट बन गया. अच्छा, let's move on. Stevens shows Frank the paper on which he recorded the data from his survey. Part of the paper has been torn. Which 5 numbers are missing from the paper? अच्छा, आपको ये इसके अंदर सिर्फ काउंट करना है. अब देखा जीरोस कितने थे? जीरोस हमारे पास होने चाहिए थे 7. So how many zeros do we have here? 1 2 3 4 5. We've got 5 zeros here, है ना? तो 2 zeros missing है.
तो वहां पे लिख देते हैं एक 2 zeros मिसिंग है, 1 कितने मिसिंग है 1 2 3 4 4 1s आ रहे हैं, 1s 5 होने चाहिए थे, we got 1 here, 2s कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 2s ऑलरेडी 6 आ रहे हैं, वो 6 ही थे, so none of the 2s is missing, 3s कितने होने चाहिए थे 4, 3s काउंट करते हैं 1 2 3, 3 भी एक कम है, यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 3 होने चाहिए थे, we have 2 4s, so 1 4 is missing, we write 4 there, right? So the idea is that यहाँ से ये पेपर फटा हुआ है, इसमें से कुछ नंबर्स मिसिंग है, अब हमें नहीं पता यहाँ पे कौन से नंबर्स आ रहे थे, राइट? तो हमने डेटा में से देखा कि कौन कौन से नंबर्स आप उनकी फ्रीक्वेंसी कम लग रही है, यहाँ पे जिस तरह 4s जो है सिर्फ 2 हैं, होने हमारे पास 3 चाहिए थे, ठीक है, तीन 4s होने चाहिए थे, एक मिसिंग है तो एक यहाँ पे इधर आ गया, सिमिलरली फॉर द अदर नंबर्स, ओके, ऑलराइट, अच्छा लेट्स मूव ऑन, आई थिंक दैट वाज प्रीटी स्ट्रेटफॉरवर्ड क्वेश्चन, you had to make sure that you understand the statement well. Now the triangle ABC has sides AB equals 8 centimeters, AC equals 7 centimeters, and BC equals 12 centimeters. We have to use a ruler and a compass to construct triangle ABC. Side AB has already been drawn for us. Achha. Now again, this is a locus question, so my drawing here may not be as accurate, but I'll tell you what exactly to do. So AB की लेंथ इसमें दी हुई है, this is 8 centimeters, ठीक है, ये आपको to scale draw हुई होगी, आपको अच्छा printed paper होएगा, it will be drawn to scale and this length will be 8 centimeters, ठीक है, अब वो क्या रहा है, AC जो है that is 7 centimeters and BC is 12 centimeters, आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी, अच्छा देखिए A से C का डिस्टेंस 7 centimeters है, A से C का डिस्टेंस 7 centimeters है, what you're going to do is आप अपने स्केल के ऊपर, so let's say this is your scale, okay, this is not very good, but let's say this is the scale that you have, ठीक है, ये उसके ऊपर कुछ मार्क्स लगे होंगे, आपने कंपास को खोलना है 7 centimeters, 7 centimeters आपने कंपास को खोलना है, ओके, और आपने क्या करना है, A के ऊपर कंपास को रख के 7 centimeters की आर्क लगा देनी है यहाँ पे, so it may look something like this, let's say, ठीक है, 7 centimeters के ऊपर आपने 7 centimeters खोल के, because you know A से C का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, एक one point is A, the other point is B, C नहीं पता आपको, C आपको मार्क करना है, आपको पता है A से C का डिस्टेंस कितना है 7 centimeters, you open the compass 7 centimeters और आपने एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है, अच्छा B से C का डिस्टेंस कितना है, it's 12 centimeters, B से C का डिस्टेंस, आपने अब कंपास को क्या करना है 12 सेंटीमीटर खोल लेना है, B पे रखना है और यहां से एक आर्क लगा देनी है, इट मे लुक समथिंग लाइक दिस, लेट्स से जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट दैट यू हैव, ठीक है, अभी आपके ऑफ कोर्स अपने आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा ये पॉइंट कहां पर आता है, नाउ ऑफ कोर्स आई डोंट हैव एनी वे टू फिगर आउट, सो आई जस्ट मेक वन अप्रॉक्सीमेटली, यू विल बी टेलिंग मी कि यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ क्या होंगी, आपने इस तरह से 2 आर्क्स बना के ये आपके पास ट्रायंगल इस तरह की बन जाएगी कुछ, ठीक है, you will say that this is 7 centimeters, बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो, this should be 7 centimeters here and this should be 12 centimeters, okay, ये हो जाएगा, it's very important that you show these arcs show करना जरूरी है, ठीक है, उसने कहा आपने कंपास और रूलर को यूज करना है, now examiner should understand that you have used that, right, आपने कंपास यूज किया, उससे आर्क्स बनाए हैं और फिर आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, so make sure that you show these arcs, उनको आपने इरेज नहीं करना, ओके, अच्छा आपने आर्क्स ड्रॉ कर दी, आपके पास से ट्रायंगल बन गई, अब आपको एंगल BAC मेजर करना है, एंगल BAC you actually need this angle here, ये एंगल आपको मेजर करना, ओके, ये आप मेजर करोगे अपने कंपास से and you'll see what that turns out to be. What you'll do is you'll put मेजर करोगे अपने प्रोटेक्टर से, you'll put your protector here like this, 0 इधर होएगा,
यहां से आप इस तरह मेजर करोगे द एंगल BAC, ये एंगल आप मेजर करोगे इस साइड से। ठीक है, अब आप देख लें आपके पास क्या आता है। सो एंगल BAC, लेट मी जस्ट चेक ये क्या होना चाहिए। ओके, सो इट शुड टर्न आउट टू बी 106 डिग्रीज। इसका मतलब हमारी डायग्राम यहाँ पे सही नहीं है, ये हमारे पास C ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन आप इसको इवेल्युएट करोगे, इसको आप मेजर करोगे तो आपके पास वो आप देख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या एंगल आता है। सो एंगल मैंने मार्किंग स्कीम से भी चेक किया, दैट शुड हैव बीन अराउंड 106 डिग्रीज। ओके, वो अपनी फिगर के ऊपर आप चेक करेंगे वो क्या आता है। अच्छा, सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम हियर, क्या आप कर लेंगे। Unfortunately, I can't do it here because I don't have a compass to use with this or a protector. अच्छा, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब ये बिल्कुल अनरिलेटेड है पहले वाले पार्ट से, ऊपर वाला हो गया। नाउ कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगॉन, ऑफ अ रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे आपसे पूछता है इंटीरियर एंगल, सारे एंगल्स इक्वल हैं, कोई भी एंगल आप कैलकुलेट कर लो, that's going to be fine, but how do we calculate this now? Remember हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था? एक तो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला होता है, that's n-2 into 180। रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, so this is the sum of angles formula. In a regular polygon, now this is only applicable for a regular polygon, रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है, that's just n-2 multiplied by 180 divided by n। सारे एंगल्स इक्वल हैं, आपको जब सम पता चल गया तो सम को आप बस वो उस नंबर ऑफ वर्टिसेस से, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एक सिंगल एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट इंपुट वैल्यूज हियर। वी हैव 12 minus 2 into 180 divided by 12। ये आप देखेंगे क्या आता है। So 1800 divided by 12, what do we get? We get 150 degrees. 150 degrees. This is what we get here. Okay? Any issues with this? All right, let's move on. Part C of this. So we've got this figure here. The diagram shows a hexagon. Hexagon क्या होता है? जिसके 6 corners होते हैं, 6 vertices होते हैं. 2 sides are parallel and there's a one horizontal line of symmetry. एक horizontal line of symmetry है इस figure की. Horizontal line of symmetry. Now it's pretty clear that line of symmetry should be around this. Should be this line here. Right? ये आपकी होनी चाहिए horizontal line of symmetry. Now, if this is the line of symmetry, it's clear that if this angle is 125 degrees, this opposite वाला angle ये भी उतना ही होना चाहिए, ये 125 होना चाहिए. Okay? If this angle is Q, ऊपर वाला angle ये भी Q होना चाहिए. Right? Because that's the line of symmetry. ऊपर ये angles सारे equal होंगे ऊपर नीचे वाले. Now, what can we do now? उसको कहते हैं calculate the angle P. P angle आपको calculate करना. Okay, so what can we do for that? Angle P के लिए one idea could be that you draw a vertical line here. यहाँ पे straight triangle बना दो. Okay, अगर हम पूरे figure को देखें उसमें तो हमारे पास Q भी आ रहा है, right? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक triangle बना लें इस तरह से, we draw a vertical line here, this vertical line here. तो उससे हमें क्या पता चला? ये एंगल 90 है राइट पे, राइट, बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये नीचे वाली वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल 90 है, नीचे वाला एंगल भी 90 है, तो ये बाकी एंगल कितना बचा? 125 minus 90, that will be 35. Similarly, the angle above, that will also be 35. तो P कितना हो जाएगा फिर? You know that P plus 35
plus 35 should be equal to 180. यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी, which is 110 degrees. Is that okay? हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे. We draw a vertical line there. ये एंगल्स 90 के बन गए, 125 में से माइनस किया, ये बाकी दोनों एंगल्स आ गए. अब फिर उस ट्रायंगल में टोटल एंगल्स 180 होने चाहिए. तो ये हमने फाइंड कर लिया by subtracting 35 degrees twice from 180. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट Q. अब आपको Q कैलकुलेट करना है, एंगल Q फाइंड करना. ओके, एंगल Q फाइंड करना है अब. सो हमारे पास P तो आ गया. जब P आ गया तो लेट्स लुक एट ऑल द एंगल्स इन दैट फिगर नाउ. सो लेट मी erase this part. मैंने पहले ड्रॉ किया था. नाउ वी नो दैट इट्स अ हेक्सागन. हेक्सागन में टोटल एंगल्स कितने होते हैं? हेक्सागन में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? कैन वी फिगर दैट आउट? Sum of all angles in a hexagon. We have 6 minus 2 into 180. What does that give us? That is 720. Okay, so this is the sum of all angles in a hexagon. ठीक है? n minus 2 into 180 बस वो फॉर्मूला पे आया किया है. Sum of all these angles, जो सारे एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं फिगर के अंदर, इन सबका सम जो है वो कितना होना चाहिए? 720. अच्छा, वो कौन कौन से एंगल्स हैं? 125 ऊपर था, ये भी 125 हो गया. अच्छा, अब ये 3p एंगल है बाहर वाला, जिसने यहाँ पे राइट पे दिया हुआ है. तो अंदर वाला एंगल कितना आएगा? दैट विल बी 360 minus 3 times p. ठीक है? So that's this angle here. Again, so that's going to be 360 minus 3 times p. ठीक है, इन सारे एंगल्स को ऐड करोगे अगर आप, तो क्या होना चाहिए? You should be getting 720 from that. So let's do that. We have p plus 125 plus 125 plus q plus 360 minus 3p. All of this should equal 720. इसको सॉल्व कर लेंगे. p की वैल्यू में पता है क्या है? 110. We have 110 plus 125 plus 125 plus 160. वो कितना बनता है? 150 and 360. नहीं, 250 and 360. That will be 610 plus 2 times q minus 3 times p. ये कितना हो गया? Minus 330 equals 720. यहाँ से अब q निकाल लें. ठीक है, so let me just evaluate this quickly. 720 में से मैं 330 ऐड किया, 610 माइनस किया और 110 माइनस किया और फिर रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दिया. So Q turns out to be 165 degrees. ये हमारे पास आ जाएगा 165 degrees. All right, is this clear? Is this clear for everyone? Okay, good. Now there could actually be a quicker way of doing this as well. अब यहाँ में भी ये कर सकते थे, आप ये एक triangle बना लेते इधर. That would have been easier perhaps. If you made this triangle here और ये angle find कर लेते हैं उसको use करके, right? तो खैर उसमें भी working उतनी हो जाती. So you could also do that. So there could be multiple methods. So that's also fine. This is what we get. Okay, very good. Let's move on. Acha. Part D of this. Acha. Now we have a trapezium that's PQRS. It's similar to trapezium ABCD. So these trapeziums are similar. AB is parallel to DC and ABC angle is 90 degrees. इसने हमें कुछ information यहाँ पे दी है. DC is 2 times AB. So ये जो नीचे वाली length है, it's 2 times the length above. Okay. BC is half of AB. The BC is half of AB. Okay.
and PQ is 3/4 times BC. उसने वहाँ पे PQ का कुछ information दी हुई है. Now given that BC is x, अच्छा BC को x लिख लेते हैं पहले. This is x. Find an expression in terms of x for the area of PQRS. अच्छा एक तो similar figures है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. Similar figures के अंदर क्या होता है? अगर हम area of PQRS को let's say 1 कह दें, A1 कह देते हैं, A1 over A2 is equal to L1 over L2 का whole square. ये हमें कहीं पे लगाना होगा, but let's figure the other things out first. अगर ये x है BC, तो उसने कहा कि BC is half of AB, यानी कि AB is 2 times BC. AB क्या हो जाएगा? 2 times x हो जाएगा. अच्छा फिर उसने ये भी कहा DC is 2 times AB. What does that mean? That means DC is 2 into 2x and becomes 4x. ये हमारे पास लेंथ आ गई, राइट? सो 4x आ गया हमारे पास इधर. अच्छा एक इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने नहीं यूज की है, that's this one. PQ is 3/4 times DC. PQ is 3/4 times DC. So let's do that. PQ is 3/4 into 4x. That turns out to be 3x. ये हमारे पास 3x आ गया. No, that's not going to be 6x. It becomes 3x, right? 3/4 into 4x किया, 4 cancel हो गए, we're left with 3x here. Okay, ये हमारे पास लेंथ आ गई. 6x कैसे आ रहा है? आप देखें यहाँ पे किस तरह 6x आता है. आप थोड़ा सा वो भी देखें कि फिगर भी आपको वैसे भी 6x आपको लग रहा है कहीं पे हो सकता है. DC की लेंथ देखें और ये PQ देखें. PQ क्या बड़ी लग रही है आपको DC से? PQ या तो उसके सिमिलर साइज पे लग रही है, थोड़ी सी छोटी लग रही है. 6x तो हो भी नहीं सकता, आपको नजर भी आ रहा है क्लियर. लेकिन वर्किंग में भी where are you getting 6x from? So we have 3/4 multiplied by DC. DC हमारे पास था, that was 4x. 3/4 into 4x, 4/4 cancel हो गए, we're just left with 3x there, right? So 3x याद है आपको. अच्छा जब ये सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ PQRS फाइंड करना है in terms of x. Okay? PQRS. अच्छा ठीक है. अच्छा वो एरिया वाला तो उसमें तो हमारे पास दोनों में से कोई भी एरिया नहीं है, सो वो तो हम अपेरेंटली नहीं यूज कर सकते. एक तो एरिया होना चाहिए था ना. वी डोंट हैव एनी एरिया देयर. हमें रेशियो तो फाइंड नहीं करनी, हमें एरिया ऑफ PQRS चाहिए. तो हमें ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. उसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स देख लेते हैं. सो वी नो दैट AB over PQ should be equal to BC over QR, which should be equal to DC over SR. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ सारी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, अब देख लेते हैं AB क्या था हमारे पास. AB was 2x. PQ क्या है? That's 3x. Okay, that should be equal to BC over QR. BC क्या है? BC is x. QR हमें नहीं पता. DC is 4x. SR क्या है? हमें नहीं पता. हम यहां से क्या कर सकते हैं? QR और SR निकाल सकते हैं. ठीक है, so for example we can once take these two. इन दोनों को हम लेते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? देखिए 2:3 है ना, so we can get it from there. अगर हम इसको यूज करें, ठीक है, we get QR equal to 3x. या फिर उसको यहाँ पे कैंसिल ही कर देते हैं to make it easier. ये x और x कैंसिल हो गए, we get 3x over 2. ठीक है, QR हमारे पास ये आ गया. इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम ये फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को यूज कर लेते हैं. ठीक है, we make another equation from there. We get 2x over 3x. That's equal to 4x divided by SR. ये भी रेशियोज इक्वल होनी चाहिए. यहाँ से हमारे पास SR आ जाएगा. SR क्या आ जाता है? That will be 12x over 2, which is 6x. ये हमारे पास SR भी आ गया.
Okay, हम वहां पे लिख देते हैं SR is 6x. Okay, and QR is 3x over 2. QR is 3x over 2. अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इसका, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट्स गोइंग टू बी 6x plus 3x. हाइट कितनी है, 3x over 2. We just evaluate this. यहाँ हम देखेंगे क्या आता है, 27x over 4. So 9 into x square आता है, sorry. So 9x into 3x, that will be 27x square divided by 4. So that's what we get. That's the area. We say this is 27x square divided by 4. Okay. Is this all right to everyone? Yes, SR 6x आ रहा है. Yes, that's correct. लेकिन ऊपर वाली लेंथ जो थी वो हमारे पास 3x आ रही थी. Okay. Any issues with this, anyone? अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप कर सकते थे, एक और चीज भी आप कर सकते थे कि आप इस ट्रेपीजियम के एरिया निकाल लेते, राइट? इस ट्रेपीजियम के एरिया निकाल लेते, या तो दैट माइट हैव बीन अ बिट क्विकर एक्चुअली. अब इसके एरिया निकाल लेते हैं. इसके एरिया क्या आता है, हाफ इनटू 2x plus 4x into the height, that's x, that will be 3x square. इसका एरिया आ गया हमारे पास. अब फिर आप ये वाली रेशियो लगा लेते हैं, right? Actually that would have been slightly quicker. Yeah, that would have been quicker. तो आप ये कर सकते थे. Is this okay? थ्री एक्स ओवर टू कैसे आया, 3x over 2, ये हमारे पास यहां से आ रहा था इस इक्वेशन से, या रेशियो से आया, बिल्कुल रेशियो से आ रहा है. ठीक है. Actually just noticed that this would have been easier. हम इसका एरिया निकाल लेते, राइट? इसका एरिया आ गया 3x square, और फिर आप क्या कर सकते थे, ये यूज कर सकते थे ये रेशियो. उससे क्या होता, you would say a1 over 3x square. L1 और L2 की रेशियो, बड़े वाली की रेशियो अगर हमारे पास ये 3x निकाल लिया था हमने और वो 2x था, so that would have been 3x over 2x का whole square. यहाँ से हमारे पास आ जाता x cancel हो गए. We have 9 over 4 multiplied by 3x square, and that gives us 27x square over 4. Okay, so that's what we could do here as well. All right. अच्छा, let's move on. Let's move on to the next one. अच्छा, अब ये काफी आसान वाला आ गया. उसने कहा factorize fully 8x square y minus 12x raised to power 5. उसने कहा fully, तो fully में you have to be a bit careful. हो सकता है दो दफा कुछ एक मल्टीपल चीजें को अप्लाई हो रही हो. अक्सर होता है completely लिखा हो या fully लिखा हो ना, आपको दो चीजें अक्सर करनी पड़ती हैं. But let's figure out. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं. अच्छा, x square भी कॉमन ले सकते हैं. What are we going to be left with? 2y minus 3x cubed, right? So is there anything else that we can do here? It doesn't look like it, right? So that's what we get. So we can't really do much else with this. So we have 4x square into 2y minus 3x cubed. Acha, उसके बाद तो कहते हैं solve this. 4x minus 2 into x plus 5 into 3. So that's 4x minus 2x minus 10 minus equal to 3. यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x is equal to 13 and x is equal to 6.5. From there, just write 6.5 there, right? That's fairly straightforward.
Acha, what do we have next? We have to solve this inequality. So we have to be a bit careful about the sign here. So 7 minus 20 is less than 5y. So we get minus 13 over 5 less than y here. इसको उल्टा लिखना होगा. हम कहेंगे y is greater than minus 13 over 5. So y is greater than minus 13 over 5 here. Okay, this is what we get. Acha. Now a rectangle has length 2x centimeters, perimeter 18 centimeters, and area 10 centimeters square. Okay, so we have to show that 2x square minus 9x plus 5 is equal to 0. अच्छा, so we have 2x, rectangle है ये, ऊपर वाली लेंथ पे 2x हो जाएगी, ये लेंथ पे 2x है, perimeter is 18 and area is 10. अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? If we say that the perimeter is that, the area is this. Okay, so we would have to use both of them. So yeah, so we may have to use both of them. So let's assume that the width is y. इसको y assume कर लेते हैं width को. Okay, in that case, what we have is perimeter जो हमारे पास आएगा वहां से. That's 2x plus 2x plus y. That's equal to 18. And we get 2y is equal to 18 minus 4x. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई वहां से. ठीक है. अच्छा, एरिया इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Perimeter is equal to 18. So that's where we're getting this from. Area हमारे पास कितना है? Area is going to be 10. So that means 2xy is equal to 10. ठीक है, आप किसी में से भी y को एलिमिनेट करके दूसरे में डाल दें. So अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अगर, so this is y equals 10 over 2x. 10 over 2x को मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ. 2 into 10 over 2x, that's equal to 18 minus 4x. We can simplify this. इसको simplify करेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. So we have 20 equals 36x minus 8x square. Let's take everything to the left side. We get 8x square minus 36x plus 20 equals 0. We can divide everything by 4, and that will give us 2x square minus 9x plus 5 equals 0. That's what we had to show. It should have been one more mark than this, but yeah, that's what we get. 2x square minus 9x plus 5 equals 0. ये आपकी equation show करनी थी. उसके बाद वो कहता है solve this equation, give your answers correct to 2 decimal places. जब भी उसने 2 decimal places या इस तरह कुछ कहा उसका मतलब होता है factorize नहीं होएगा, quadratic formula use करना होएगा. So let's do that. 2x square minus 9x plus 5 equals 0. Let's apply the quadratic formula. We have minus into minus 9 plus minus square root of minus 9 ka whole square minus 4 into 2 into 5 divided by 2 times 2. इसका आप evaluate कर लोगे, you'll get 2 results. तो आप देखें क्या आते हैं. So you should be getting 3.85 and 0.65. या आपके पास 2 results वहां से आ जाएंगे. ठीक है, so you should be able to do this yourself. उसके बाद वो कहते हैं find the difference between the length and the width of the rectangle. So आपके पास x आ गया, right? Now x is this. So y क्या होएगा? y हमारे पास आ जाएगा फिर ऊपर, इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर लें. So you have y equals 10 over 2x. तो y हमारे पास आ जाएगा 10 over 2 times x. तो इसमें से अगर हम 3.85 इनपुट करते हैं इसके अंदर, what do we get? 3.85. We get 1.3
from there. हमारे पास आता है 1.3. अच्छा, हम 3.85 इनपुट करते हैं जब इसके अंदर हमारे पास जो y आता है that is 1.3. ठीक है. अच्छा, अगर हम 0.65 इनपुट करें, अगर हम 0.65 इसके अंदर इनपुट करते हैं तो क्या होता? What would we get in that case? We would be getting 10 divided by 1.3. That will be 7.7. ये हमारे पास आएगा 7.7. Okay. So basically, आप अगर पहला वाला देखते हो, पहला वाला केस आप देखते हो, तो उसमें आपकी width जो है that is 1.3, y 1.3 आता है, और लेंथ कितनी आती है? Remember लेंथ क्या आती है? Length was 2 times x, 2x. Length वहां पे क्या आती? That will be 2 into x, that is 3.85, which is 7.7. ये आपकी width थी पहले वाली. अगर आप ये दूसरी x की वैल्यू यूज करते उस तो उल्टा हो जाता, आपके पास आ जाता width 7.7 और लेंथ आपके पास यहाँ पे आ रही होती width 7.7 आती है वहां से, और लेंथ हमारे पास आ रही होती है 1.3. Right? Now, of course, we can look at the figure there. Length is bigger and the width is smaller. We पहला वाला केस यूज करेंगे 1.3 और लेंथ जहाँ पे 7.7 है और width 1.3 है, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे क्या आता है. 7.7 minus 1.3, that will give us something. That will be 6.4. 7.7 minus 1.3. That turns out to be 6.4. So that is the difference between the length and the width. अब दूसरे से भी कहते वही आता है, बस उसमें नेगेटिव आ जाता है. You'll have to make that positive. ठीक है? So this is what we get here. So that's question number 5. Any issues with this? Yes, Manahil, we will be doing them in the next week, inshallah. Next week, what we can do is we can have we can actually do those top topics first, और topics पहले कर लेंगे, but 2020 के papers जो हैं हम फिर साथ जो है थोड़ा सा वो एग्जाम टाइम के बिल्कुल करीब चले जाएंगे. that's okay. हम फिर कोशिश करते हैं कि टॉपिक्स हम पहले कर लेते हैं और फिर हम 2020 के जो एक दो पेपर्स रह जाएंगे वो हम फिर उसके बाद कर लेंगे टॉपिक्स के बाद. तो we can do both topics in the next week, inshallah. Both transformations and statistics and probability. So I think these are the only two that we will be able to do now. तो हम next week में inshallah ये दोनों topics ही कर लेंगे cover. Okay. अच्छा, let's do this last question before we end today. Question number 6. Okay, all right. Let's do question number 6, and then we will end. We will do that the rest tomorrow, inshallah. So we have this universal set. That's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have this universal set. We have the sets A, B, and C. You have to list the members of the subsets B intersection C. Okay, B intersection C लिखना है. अच्छा, इसमें बेहतर होता है अगर आप पहले सारे नंबर्स सारे सेट्स लिख लें. So X is a prime number. Universal set के अंदर से कौन-कौन से prime numbers आ रहे हैं? 2, 3, 5, 7, 11. That's it. These are the 5 values there. So set B में क्या है? Even numbers. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12. X is a multiple. C is a set in which we have multiples of 5, so that's 5 and 10. अच्छा, और क्या कह रहे हैं? B intersection C. B और C में क्या common है? Members आपने सब list करने हैं, so there's only 10 that is common. So we just write 10 there. अच्छा, फिर वो कह रहे हैं A union B union C a complement. Okay, what does that mean? A, B और C को combine कर दें. इन सबको combine कर दें. अब इनके बाहर कौन से एलिमेंट्स हैं? That's what they're saying, right? A, B, C को कंबाइन कर दिया. कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस के इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं? So basically कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनमें से किसी भी सेट में नहीं आ रहे? Okay?
तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं तो इनमें से कहीं पे भी नहीं आ रहे. So we have 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is not anywhere and बाकी सारे हैं. So 9 हमारे पास इधर आ जाएगा. There's only 9 that's not coming anywhere. Okay? Yeah. अच्छा. अब इसमें देखें क्या कह रहे हैं. A intersection B complement. We have to be a bit careful there. You have to be inside A. A के अंदर होना चाहिए. B के अंदर नहीं होना चाहिए. So inside A, outside B, right? Intersection है. There's an and there. Inside A and outside B. Let's look at the sets. A के अंदर हो और B के अंदर नहीं हो. ठीक है. So 2 तो दोनों में है. नहीं. 3 A में है B में नहीं है. So yes, that satisfies our condition. ये होना चाहिए. अच्छा. 5 भी A में है B में नहीं है. So that's correct. 7 is also in A, not in B. Part 7. 11 is also in A, but not in B. That's 11. इसको words में इस तरह समझ सकते हो. All the prime numbers that are not even. Right? सिर्फ even आपका prime number सिर्फ 2 ही होता है. उसके अलावा बाकी सारे prime numbers आप लिखते हैं वहाँ पे 3, 5, 7 and 11. That's A intersection B complement. ओके अगर आप इसको वेन डायग्राम के अंदर देखो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या कौन सा रीजन होता है ए के अंदर आ रहा हो बी में नहीं आ रहा हो दैट्स दिस रीजन राइट हियर बी के बाहर वाला ओके अच्छा now a number q is chosen at random from the universal set and find the probability that q belongs to ये जो साइन होता है इसका मतलब है q belongs to q is a member of this set A intersection B complement. अच्छा अभी तो ऊपर लिखा है हमने ये वाला सेट है उसके मेंबर सारे लिखे हैं हमने अब एक रैंडमली आपने नंबर चूज किया है फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने नंबर्स आ रहे थे टोटल 2 से लेकर 12 तक देयर टोटल 11 नंबर्स अब इनको काउंट कर सकते हैं देयर टोटल 11 नंबर्स तो डिनोमिनेटर तो 11 होएगा उसमें से कितने जो हैं वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं 4 so the probability that this number q belongs to A intersection B complement is 4 divided by 11 because 4 elements हैं जो उस condition को satisfy करते हैं उस set के अंदर आ रहे हैं 4 out of 11 is going to be the probability for this okay अच्छा then it's some matrices 2x plus y so just evaluate that 2 into 3 2 minus 1 0 plus y so that's minus 1 2 1 we get 6 4 minus 2 and 0 plus 2 minus 1 2 1 what do we get from this we get 8 and 0 and 3 and 1 right so that's our result here उसके बाद कहते हैं inverse find करें y का inverse हमें दो चीजें चाहिए होती हैं determinant क्या होता है 2 into 1 minus 2 into minus 1 so let's do that determinant is 2 into 1 minus 2 into minus 1 that is going to be 4 determinant 4 आ गया अब सिर्फ क्या करना है y inverse find करना है y inverse what would that be 1 over the determinant into adjoint of y that's 1 over 4 into adjoint of y ये वाले elements interchange करने हैं so 1 here and 2 here उनकी पोजीशन स्विच कर देनी है और बाकी दोनों के साइंस रिवर्स कर देने हैं ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा that's your inverse अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो you've got 1 over 4 then 1 1 minus 2 and 2 that is your inverse matrix ठीक है okay so then there's section B so we stop here for today we will continue with this in the next session inshallah and complete this paper so if you have any questions on any of these problems let me know otherwise we will continue with this in the next session inshallah Minal I've seen your message let me actually look at that in the chat box right now
अच्छा, so where is that? So let me just check. It might be easier अगर हम अभी डिस्कस कर लें उसको, वो